हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटोर साइमा और आज हम एक नए लेसन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी टुगेदर। सो वो नया टॉपिक जो आज हम सीखने वाले हैं वो है नंबर्स। आज हम 1 से लेके 10 तक के नंबर्स इंग्लिश में पढ़ेंगे। सो लेट्स काउंट टुगेदर। As you can see in the screen that there is already number 1 is written, right? O-N-E, 1. And in the picture you can see one balloon is there, right? एक balloon यहाँ पे mention है और हम 1 को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? O-N-E, 1. Now we have number 2. T-W-O, 2, right? In the picture you can see two giraffes are there, 1 and 2. So T-W-O, 2, right? Now we have number 3. T-H-R-E-E, 3, right? Number 3 is T-H-R-E-E, 3. You can see in the picture we have 3 ice creams cones. हमारे पास 3 आइसक्रीम कोन्स हैं. Moving forward, now we have number 4. F-O-U-R, 4. We have 4 pineapples. 1, 2, 3 and 4. We have 4 pineapples in the picture, right? Now we have 5. Number 5. F-I-V-E is 5. As you can see in the picture, we have 5 cookies. 1, 2, 3, 4 and 5. How we write 5 in English? F-I-V-E is 5. Number 5. Now we have number 6. S-I-X. 6. As you can see in the screen, we have 6 cars. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. We have 6 cars. We have now number 7. S-E-V-E-N, 7. 7. And we have 7 aeroplanes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 7 aeroplanes. Now we have number 8. Now we have number 8. A-I-G-H-T, 8. As you can see in the screen that we have 8 pictures or 8 images of butterfly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. We have 8 pictures of butterflies. Now we have number 9. N-I-N-E. हम इंग्लिश में 9 नंबर को कैसे लिखते हैं? N-I-N-E, 9. Right? We have now 9 bottles of juice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Right? Now we have number 10. नंबर 10 को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? T-E-N-N, 10. T-E-N is 10. We have 10 plates of eggs, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. हमें यहाँ पे कितनी प्लेट्स नज़र आ रही हैं? 10 plates हैं, right?
आज हमने क्या सीखा? नंबर्स को हमने 1 से लेके 10 तक इंग्लिश में लिखना सीखा, पढ़ना सीखा और आपने याद भी किया मेरे साथ साथ बोलकर। सो नाउ एट द एंड I have some questions for you. You can see on the screen. Number one question is which number is missing? आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखकर कि इस सेंटेंस में कौन सा नंबर मिसिंग है, राइट? 1 2 3 4 -6 and 7 कौन सा नंबर मिसिंग है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है वो ये है, टेल मी हाउ मेनी आईज डू वी हैव? आप मुझे बताएंगे कितनी आईज हमारे फेस पे होती हैं। ये आंसर भी आप मुझे लिख के बताएंगे। नाउ फॉर मोर लर्निंग वीडियोस यू हैव टू अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू डू दिस। क्यों? का सपोर्ट जो है वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और ज़्यादा टीचिंग और लर्निंग वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए और उसको यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ताकि आप नंबर्स को अच्छे से ट्रेस कर सकें, अल्फ़ाबेट्स को ट्रेस कर सकें, याद हो सके, इंग्लिश में कैसे नंबर्स को लिखते हैं 1 2 3, इस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों के लिए वर्कशीट्स खुद बनाई है। कस्टमाइज्ड वर्कशीट्स होती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाएगा और वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी। ज़रूर डाउनलोड करिए और अच्छे से इंग्लिश में नंबर्स को कैसा लिखते हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। योर सक्सेस इज़ आवर मिशन। थैंक यू सो मच।